जो प्रश्न रह गया था कि विज्ञान के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसका उत्तर बनते जी ने कहा कि आज दे देना चाहिए। तो विल सिट टुगेदर एंड डू दैट। दिक्कत ये है थोड़ी सी कि विज्ञान के बारे में ठीक से जानना काफी कठिन है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स a deep concentrated mind and reflective mind। जैसे आपने देखा होगा कि रूप वेदना संखार हमारे अनुभव में आ जाते हैं, isn't it? In our practice we can actually experience them। sanya we can't experience, we have to infer। vigyan is even more difficult। why? Vigyan is the means by which we know anything। how do you investigate vijnana? So it's quite a challenge। So let us sit quietly, and I've left a question for you. How do you investigate vijnana? How do you know? How can we directly experience that vijnana is anicca? Is it possible? Theoretically, logically. In fact, this question itself has led to so much of metaphysical speculations, because normal beings, it's not possible। तो हम डॉक्टर साहब सॉरी, थोड़ा माइक के करीब आ जाएंगे। सॉरी सॉरी। मैं निवेदन कर रहा था कि इसको मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ है आपसे शेयर करने की, but it will need some kind of a logic and something be able to see the process of knowledge। तो उसके लिए थोड़ा सा हम 5-10 मिनट चित्त को एकदम समाहित कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। So let us sit quietly for 10 minutes or so।
चलिए हम प्रयास करते हैं समझने का कि विज्ञान के बारे में साधना कैसे की जाए, क्योंकि भगवान की शिक्षा में यथाभूत ज्ञान दर्शनम को बहुत महत्व दिया गया है कि डायरेक्टली देखें उसको। लेकिन हमने देखा कि कई चीजें डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, जैसे संज्ञा का हमने अनुभव किया था। तो जब हमने संज्ञा की चर्चा की तो कैसे वो पता किया, हमने काफी उस पर समय बिताया। हमने कैसे पता कि ये संज्ञा है? Can I request somebody to explain? How did we know? हमारे अनुभव में क्या आया? एक रूप आया या शब्द आया, वो डायरेक्ट अनुभव में आता, देखते हैं सुनते हैं, इट्स ओके। फिर कोई वेदना हुई और हमने कहा ये वेदना ऐसी क्यों हुई? तो क्या हमको डायरेक्टली संज्ञा का ज्ञान हुआ या हमने कुछ किया उसके जानने के लिए? सर हमने इन्फ्रेंस निकाला, जो हम जिस संस्कार की तरफ मोटिवेट हुए उससे और वेदना से, दोनों से। वेरी गुड। एक इन्फ्रेंस निकाला एक, और वो हमारे किस बेस पे? हमारी मेमोरी के आधार पे, हमारे पुराने कर्मों के आधार पे, कि और अपनी अंडरस्टैंडिंग कि मेरा इस तरह का चरित्र है। तो कई सारी इनपुट्स रहती हैं जो साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। और कई जगह हमने देखा कि एक से ज्यादा परसेप्शन थे। वी नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ कटिंग इट अक्रॉस, वो हम नहीं कर रहे अभी, कि कई सारे परसेप्शन थे लेकिन उनमें से एक डोमिनेट कर गया और उसका ये इम्पैक्ट, ये भी हमने देखा ना। तो उसमें एक तरह की डिफिकल्टी थी, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ एविडेंस था और उस एविडेंस के आधार पर हमने कहा हाँ संज्ञा नाम की चीज है, तो एक संज्ञा नाम का मेंटल फैक्टर है जो कि हमारे अनुभव को मॉड्यूलेट करता है। अब यही प्रश्न हम विज्ञान के बारे में पूछते हैं, क्या विज्ञान का डायरेक्ट अनुभव हो सकता है क्या? सर वो भी इन्फ्रेंस ही है, बाय मीन्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कॉग्निशन। जब मैंने किसी चीज को देखा तो मुझे पता चलता है कि मेरी आईसाइट अच्छी है या अच्छी नहीं रही। तो मेरे पास जो डेटा था, सूचना थी, वो क्या थी कि कुछ दिखाई दिया, कुछ सुना, और हमने उसका नाम दे दिया देखने की शक्ति, चक्षु विज्ञान, है ना? और हमें लगता है कि ये देखने की शक्ति जो देखा गया उससे भिन्न है और जो आंख है उससे भिन्न है। इससे हमारा लॉजिकल एनालिसिस हो रहा है ना, तो ये इन्फ्रेंस। तो कई बार आप देखेंगे लिटरेचर में इन्फ्रेंस के महत्व को प्रस्तुत नहीं कहा जाता है, तो चिंतनमयी पन्या है, सो ये तो इट कांट लिबरेट यू, which is in some sense, in some cases true, because if it is purely mental cogitation without any basis, तो वो मेटाफिजिक्स वगैरह ऐसी बनती है। तो मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि लॉजिक में, अब उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है लॉजिक में, और जो हमारा थेरावादा बुद्धिज्म है उसमें उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, बाद में ध्यान दिया गया। नॉलेज कैसे बनती है, क्या उसकी वैलिडिटी है। तो ये जो हिजोरीनेस बात करते हैं, चंद्र कीर्ति वासुबंत, उन लोगों ने इस पर बहुत काम किया, बट इट्स बियॉन्ड अस। सो मैंने वो देखने की कोशिश की थी तो छोड़ दिया। हमने कहा अपनी जो रॉ अंडरस्टैंडिंग है उसी को इस्तेमाल करके समझते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि इनसाइट जो है, जिसे हम कहते हैं ना अंतर्दृष्टि, विच इज द की फैक्टर विच यू वांट टू डेवलप, विच ट्रांसफॉर्म्स अस। इनसाइट मीन समथिंग विच ट्रांसफॉर्म्स अस। अब वो हमको याद रहती है कि नहीं वो बात अलग है, बट
हम सब लोगों की बात क्लियर है कि भैया जो कुछ है वो अनित्य है. Now, this has become almost like an insight for us. Why I'm saying almost, because we still tend to forget it. A real insight is something which we just not forget. Like कि हमने बिजली के प्लग में स्विच उसमें सॉकेट में हाथ उंगली डाली, करंट आया, अब हम नहीं भूलेंगे. ग्रॉस एग्जाम्पल. और इनसाइट जो है किसी भी इंद्रिय के द्वार पे किसी चीज को गहराई से देखने से डेवलप होती है. जो अगर आप नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर देखें तो इनसाइट डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके बताए गए, और हम उसका रेफरेंस भगवान की टीचिंग में पाते हैं. भगवान प्रवचन दे रहे हैं और इतने लोग मुक्त हो गए. क्या हुआ भाई, कैसे मुक्त हो गए? आज ही हमने सुबह पढ़ा चूल पंथक की कहानी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही. वो रुमाल से यूं कर रहा है, और भगवान उसको, जब वो उसको समझ में आ गई कि अनित्य है, उसको वहां से रेडिएट करते हैं कि तुम इसको इनफैक्ट इसको डीपली स्टडी करो, अपनी समाधि पुष्ट करो, और देखो तुम्हारे सब समझ आ जाएगा. एंड ही डेवलप्स एवरीथिंग. दैट इज ऑफ कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. बट आप, हमने थ्योरी गाथा में भी पढ़ा था कई जगह, आपको शायद याद होगा. एक थ्योरी जिनकी यंग बेटे की डेथ हो गई थी, किस्सा गौतमी शायद, वो जब मंक नन बन जाती हैं और साधना कर रही हैं, कुछ ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा, तो एक बार वो रात्रि के समय सोने से पहले, क्योंकि वो वॉकिंग करती थी, पानी डाल के पाँव धो रही थी. क्या देखा उन्होंने? पहली बार जब डाला तो पानी यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस गया. दूसरी बार डाला तो यहाँ तक गया. तीसरी बार गया तो यहाँ तक गया. जस्ट ऑब्जर्वेशन. एंड फ्रॉम दैट शी डेवलप्ड इनसाइट कि ओहो, इसी तरह से किसी प्राणी की लाइफ छोटी होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पुश. कार्मिक पुश डिटरमिन करता है. तो मैं क्यों पर अभी भी अपने मन में बैठी हुई हूँ कि मेरा बच्चा छोटी उम्र में मर गया, ये हो गया, वो. एंड दैट वाज एनफ टू रिलीव हर एंजाइटी एंड लीड हर टू लिबरेशन. वेनरेबल पायोतो की किताब में बड़ी सिंपल सी चीज लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. आई जस्ट रीड आउट टू यू. A person may watch falling leaves and consequently develop insight knowledge, vipassana jnana, and discern the impermanence of all things. This relies on numerous perceptions as its source. For example, perception of life, sustenance of things, perception of aging, decay, perception of death, ending of things, perception of above, below, and so on. But the ability to use relationship between these various perceptions gives to insight knowledge. And then he quotes a mundane example of Isaac Newton. उन्होंने एप्पल गिरता हुआ देखा और उससे इंसाइट डेवलप की कि एक फोर्स है, कहीं दिखती है क्या फोर्स? ग्रेविटी किसी को दिखती है क्या? एंड देन ऑफ कोर्स साइंस हैज इट्स ओन वेज ऑफ वेरिफिकेशन. तो उसको वेरीफाई किया गया, फॉर्मूला बना के वेरीफाई किया गया. तो इसी तरह से जो एनालिटिकल नॉलेज है वो इस बेसिस पे भी डेवलप करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस इन्फरेंस वी कैन डेवलप एनालिटिकल नॉलेज और डेवलप इनसाइट नॉलेज ऑल्सो. तो एक बुक जो रेफरेंस मैंने देखा था उसमें ये बात लिखी थी, closely allied to insight. In fact, it could be called as planned insight. Is inference developed and checked out on an ongoing basis during analysis until one is convinced an inference is no longer tentative conjecture but becomes an analytical fact. Then it becomes an insight. It transforms it. Now, I would like to submit to you some of the teachings of the Buddha. For example, Anatta Lakhana Sutta. उसमें भगवान क्या कहते हैं? विज्ञानम अनत्ता विज्ञानम हीदम दुःखवे अत्ता भिगुस्सी नाइदम विज्ञानम आबादाय सम्मते. तो क्या कहा जा रहा है? भाई विज्ञान
अनात्म है क्योंकि विज्ञान अगर आत्म होता तो हमें कष्ट नहीं देता, और हम अपने विज्ञान के बारे में क्या ये पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो, एंड ही यूज द सेम आर्गुमेंट फॉर ऑल खंडास. What is this? Is it direct seeing? There is an element of experience in the sense that विज्ञान के आधार पर अगर हम उसको मैं मानते हैं और वो अपने आप बदल जाता है, और वो it becomes, eyesight becomes poor, falls down, and then it's not within my control. So it's basically talking of not within my control. तो इसलिए वो अनात्म है. Strictly speaking, it's an inference. और go further, second argument जो देते हैं, यन परिचम दुखम विपरिणाम दंगं कल्लुम तुलसी, सब इट्स ऑल अप्लाइड टू एवरीबॉडी. जो चीज दुख है, परिवर्तनशील है, उसे ये समझना ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा आत्मा है, क्या ये ठीक है? और सभी भिक्षु कहते हैं नहीं बनते. व्हाट इज दैट? इज इट डायरेक्ट सी? इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स. इट्स नॉट purely a conjecture, a metaphysics. It is based on experience. कि भाई हाँ, हर खंड में दुख भी होता है, वो बदल जाता है, हमारे चाहे ना चाहे बदल जाता है. तो इसलिए अगर वो मेरा होता तो ऐसा ना होता. So does it make sense? I'm trying to point out something. So just to connect the dots, so what you're saying is कि विज्ञान को डायरेक्टली तो हम नहीं जान सकते, so therefore we have to rely on inference. And although Lord's teaching says that yatha bhut jnana darshan, so there is direct knowing, but in this case and in some other cases, inference is drawn, and that is repeated so many times and seen so clearly, and with analysis, that becomes an insight. Yeah. And for substantiating my statement, I've given to you the Anatta Lakhana Sutta and many other suttas. You can see many other suttas. This kind of cause-effect relationship is analyzed. There's an analysis. उस पे inference निकाला जाता है. और खासतौर पे विज्ञान के सबसे बड़ी दिक्कत यह है विज्ञान को समझने में कि वो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग है. अब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग के बारे में कैसे जानेंगे? यू कांट मेक इट एन ऑब्जेक्ट. यू कुड मेक वेदना एन ऑब्जेक्ट. आवर ओन बॉडी कैन बी मेड एज एन ऑब्जेक्ट. आवर sankharas can be made as object because we directly experience it. Even sanya can be made as an object because it's a mental thought. But how do you make consciousness, जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉग्निशन है, उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ चीज होनी चाहिए ना जानने के लिए. Does it make sense? This is the fundamental dilemma which has led to so many philosophies, Advaita, Vishishtadvaita, and so on. Sir, is this taking us back to knowing the knower? Yeah, we have a perception that we are knowing the knower. So you have to really very deeply see that who is knowing the knower. We are making a hypothesis that there is somebody else who is knowing the knower, who is not within the sixth sense base. That's an hypothesis. That's a speculation. I'm sorry. I'm just being absolutely, because I've reflected on that so long to drive myself to craziness. It may be true. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's wrong at all. But it is a speculation. How do you know that there is something? How do you know that there is a consciousness which knows this? How do you know it? You can't know it directly. It's an inference. Isn't it? Are you with me? आप लोगों को, is it making sense or is it getting overboard? हाँ, पूनम ने कुछ हाथ खड़ा किया, बोलो बेटा. पूनम, you want to say अगर something? ऐसी बात अगर हम मैं जो सर, am I audible? आपको आवाज आ रही है? शुरू में आवाज आ रही है सर?
अब ठीक है, शुरू में कुछ समझ नहीं आई थी, दोबारा बोल दो। आई थिंक आप भी अपना वीडियो बंद कर दो, शायद तब चल जाएगा। एनीवे, कोई बात नहीं, देख लेना जब पॉसिबल हो। Sir, can you hear me now? हाँ हाँ, बोलो। आपकी पिक्चर ना वो हो रही है, पिक्सलेट हो रही है, मतलब उससे फ्रेम फ्रेम आ रहे हैं, तो हम आपका अनात्म भाव पूरी तरह देख सकते हैं। तो इसलिए आप ना वीडियो बंद कर दो। We can see you moving like this. Okay. Just, yeah. Okay. Yeah, Can yes. you, yeah. Yeah, we can hear you now. Yeah. Yes. Sir, actually, अगर सर हम ऐसे बोले कि that we will make an inference, तो फिर जब हम बात कर रहे हैं कि निब्बान में there is no विन्याना, तो वो वहां पर फिर अभी तो फिलहाल हमारी इंटेलेक्चुअल इनकैपेसिटी या कह लीजिए अभी हमारी क्षमता नहीं बढ़ी है, इसलिए हम नहीं देख रहे। बट the very fact, if we accept this, अगर मैं ये बात मान करके काम करूंगी, तो then it will not lead me to निब्बाना की तरफ जो हम बात कर रहे हैं वो क्यों? शायद। How do you know that? सर आप ही ने तो बोला ना कि निब्बाना में there is that is something beyond our thinking. No, so तो थिंकिंग, अभी हम तो थिंकिंग वाली बात नहीं कर रहे सर। एक सेकंड, थिंकिंग क्यों करेंगे हम लोग? Because this is all practical, ना? We just do it to, and with an understanding we do it. Yeah, what is the understanding? Understanding is that we need to know vinyana. To my understanding, we need to know. अभी फिलहाल incapacity है। नहीं, incapacity नहीं है. I'm not saying that there is incapacity. I'm saying the tools of knowing Vijnana are different from tools of knowing other things. That's what I'm saying. I'm not saying it's not possible. Certainly it's possible. और हम देख रहे हैं तो विज्ञान है ना, उसी को तो विज्ञान कहते हैं, उसमें क्या इम्पॉसिबल बात है? दिक्कत ये है कि वो विज्ञान की, अगर कोई कहे मुझे विज्ञान का अनिश्चय देखना है डायरेक्टली, जैसे मैं वेदना का अनिश्चय देखता हूं वैसे मैं विज्ञान का अनिश्चय देखना चाहता हूं। सॉरी, यू कांट डू दैट। Maybe not at present, or maybe little later, जब हमारा थोड़ा पक जाए। How? So the moment you are understanding that, there has to be some logic for it. It's not understanding only. आपका कोई टूल है जानने का, जिसके माध्यम से आप जानते हैं। विज्ञान उसी को कहते हैं ना, देखने का टूल है, सुनने का है। उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को कैसे जानेंगे? Are you able to understand that? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, जो मैंने अभी आपने जो एक्सरसाइज दी थी उसके बेसिस पे होपफुली अगर मैं ठीक एनालाइज कर पा रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मैंने जो सोचा वो वही है क्या। अभी फिलहाल मेरे को जब आपने बोला मेडिटेट करने के लिए, बैठने के लिए और देखने के लिए, तो देन मतलब जब मैंने देखा तो मुझे नाक में कुछ स्मेल आया, बट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाई? कुछ स्मेल जैसा है, स्मेल ऐसा लग रहा था स्मेल है, लेकिन स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। तो इसमें that is a distinction। तो बहुत ज्यादा वो थोड़ी ना बात हो रही। आपको स्मेल आई, that itself is विज्ञाना, knowing। So when you are not able to identify that कि वो स्मेल है, बोलिए ना आप। I just want to understand what is the question। मैं ये कह रही हूँ, एक मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम क्योंकि there is he has discerned this vinyana। Please let me explain again। Vinyana means discerning that there is something. What is it is not the question of vinyana, that is on sanya। Whether it is pleasant, unpleasant is on with the feeling।
दैट्स हाउ वी हैव डिस्टिंग्विश 5 खंडों को इसीलिए तो किया है। विज्ञान का काम सिर्फ इतना है कि कुछ है। बस उतनी ही तो नाक, जानकारी सुनो ना। सुनो ना, नाक के द्वार पे कुछ है, क्या है, अच्छा अभी है, बुरा आइडेंटिफाई नहीं है, वो किया, नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं किया। वो कर ही नहीं सकते, वो विज्ञान का काम नहीं है, ये तो मैं हाँ समझ। हाँ, तो जस्ट वो जाना कि कुछ स्मेल है, हाँ ठीक है। हाँ जी। ये वाली बात जब जाना, तो उसके बाद की प्रोसेस नहीं बात कर रहे, लेकिन तो you are, there is a separate, you are discerning one thing. What I'm trying to say is, हाँ हाँ, फिर दैट इज कॉल्ड विज्ञान। हाँ, तो मैं वो ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप इंटेलेक्चुअली आप बोल रहे हैं कि लाइक यू हैव टू, ये हम उसका नाम दे रहे हैं बेटा, समझने की कोशिश करो। उस स्मेल एबिलिटी का हम नाम दे रहे हैं कि इसको विज्ञान कहते हैं। ये हमारे अनुभव में आता है, बट हम डायरेक्टली उसको एज एन ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, जैसे वेदना को देखते हैं। ये कह रहा हूं मैं। let it be, sir. Why we need to name it? नहीं नहीं, द क्वेश्चन इज दैट इज बाइंडिंग अस। विज्ञाना इज द ग्रेटेस्ट बाइंडिंग कि मैं So देख it रहा is better हूं। to see. It is समझ better to गए? see. That is the biggest problem which tells us I am seeing, I am smelling. That is the one, that is the ultimate bondage. उसके अनित्य दुख अनात्म स्वभाव को कैसे जाने, यही तो बात हो रही है, मुख्य बात। तभी तो मैंने अनात्म लक्षण सूत्र आपको पढ़ के सुनाया। भगवान कह रहे हैं कि वो अनात्म है। वो क्यों नहीं कहते कि साथ आंख मान के ध्यान करो और पता चल जाएगा विज्ञान अनात्म, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? वेदना को तो कहते हैं, वेदना सुख, सुखम वा वेदनम वेद्यमानो, सुखम वेदनम वेद्यामि उपजानाति, and we know we can do it. That is the point being made, that we have to accept that the anicca, dukkha, anatta, vijnana are of a different kind. To comprehend them is a different kind, and we have to come to these conclusions by analysis of our experience. That's my understanding. Of course, if you develop the supernormal powers and samadhi to such an extent, and you are in a state of nibbana, then what happens, I don't know. But Sir, approach, I am talking about the approach. approach to see Vijnana. Just हमें जो देखना है, वो जो बोला गया वो ही कर, लाइक वैसा ही बात, मतलब ओके, अभी एबिलिटी है, लेकिन जब उसकी जरूरत है हमारे को, अगर सपोज आज नहीं बने, कभी किसी जमाने में कभी होगा, सो लाइक अभी तो हम ये देख सकते डेस्टिनेशन में हैं, पहुंचने के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है कि मैं विज्ञान को देख लूं। नहीं सर, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मेरा भी नहीं है सर। अगर सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे को कंप्लीट लिबरेशन चाहिए, एंड कंप्लीट लिबरेशन के लिए दिस इज द वे टू डू इट। व्हाट इज द वे टू नो अनिच्चा दुक्खा अनात्ता, टू नो दैट दीज थिंग्स आर this, or if you want to put it in other words, सुनो शांति सुन लो, to remove all raga, dosa and moha towards all khandas. That is the objective. Correct. Period. Now for that, whenever we see getting trapped, I am seeing, I am hearing, I am smelling, then we reflect. Who is seeing? Who is because you will say, no, I should be able to see that I am not seeing. It is happening naturally. That is an inference. वो मैं सिर्फ point out कर रहा हूँ। फर्क है वेदना में, संखार में, रूप में, और बाकी दोनों चीजों में फर्क है। संज्ञा में आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया था। विज्ञान में क्योंकि मैं स्पेसिफिकली रेज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, टू पॉइंट आउट टू यू द difficulty involved in that, then you are raising the question. Very good. I wish that we raise the questions, but we don't get overwhelmed by the question. It is only I'm just pointing out, क्योंकि हम लोगों को कईयों को ये धारणा रही है, मेरी भी ये धारणा रही है आज से 15 साल पहले तक, कि सब चीजें मुझे डायरेक्ट रियलाइज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं संज्ञा को 25 साल तक प्रैक्टिस करते करते संज्ञा नाम की चीज को पकड़ ही नहीं पाया। पढ़ा था
कैन एक्सप्लेन क्या है, बट मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया। 25 साल मैंने इंटेंसिव साधना की है उस एक ट्रेडिशन में, और अनात्म बात समझ ही नहीं आई। वो थियोरेटिकली समझ में आ गई, So लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट नहीं experience किया। वाले- सुनो प्लीज लिसन केयरफुली, क्योंकि इन्वेस्टिगेट नहीं किया गहराई से, दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू रिफ्लेक्ट, आस्किंग यू टू इन्वेस्टिगेट, that through investigation, through reflection also, you can come to a deep direct knowledge which can liberate. So if you can understand anicca, dukkha, anatta, vijnana, even indirectly, वेदना का दुख तो एक्सपीरियंस में आ जाता है ना भाई। So we know that. Similarly, about vijnana, we have to understand. That's why I wanted to make it clear, ताकि हमें उस तरह की क्वेश्चंस ना उठ पाए कि क्या करना है। ओके, हाँ जी, इफ देयर आर सम वेरी काइंडली से इट इन ब्रीफ बिकॉज टाइम ज्यादा चला जाएगा। दीपक जी, इफ मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि जो विज्ञान का जो इम्पावरनेस है, उसके लिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस ही करना पड़ेगा, और वो भी तब जब मान लो हमारी आंखें ठीक थी, अब चश्मा लग गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई विज्ञान जो है इम्पावरनेस है। इट इज नॉट एक्सपीरियंस ऑन मोमेंट टू मोमेंट, जैसे बाकी वेदना वगैरह का एक्सपीरियंस होता है, संज्ञा का होता है, मोमेंट टू मोमेंट कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान के लिए अगर इम्परमानेंस के, हाँ वो देख लेते हैं, ठीक बात। तो इट हैज टू बी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। हमने एक ऑब्जर्व किया, और जैसे आपको कोरोना हुआ तो आपकी टेस्ट की स्मेल चली गई, तो वी कैन कंक्लूड कि भाई ये भी इम्परमानेंट है। इट इज ओनली इन्फ्लुएंस बाय, इट इज नॉट ऑन मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। इसका इम्परमानेंस नहीं कर सकते हम लोग। क्या एम आई राइट टू कंक्लूड दैट? Let us see that also. Yeah, but it is clear that we can do by inference. Moment to moment basis पे inference हो सकता है कि नहीं, we'll see that. Okay, okay. प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी, आप बताइए। I don't know whether I'm biased as a scientist or engineer, but I always assumed that Dhammavicaya means all these things. It means direct seeing also through analysis, through inference. So maybe my understanding was wrong. I don't know. मतलब yeah, I mean we will like to believe in that way. Unfortunately, the Buddhist literature undervalues that very much. It sees it is essentially Chintanamayi Panya. That is the perception, because वो जो conception है ना, एक variati patipatti नहीं sorry, Sutamayi Panya, Chintanmayi Panya, and Bhavanamayi Panya. And Bhavana is normally called by technically quote unquote meditation, which essentially means you keep your eyes closed and do something. What I'm very humbly suggesting based on my own experience, please don't accept it right away, investigate. That for many of the things, especially Sanya and Vijnana, you have to experience it with open eyes. You have to do that meditation in day-to-day life. Then only you will be able to get the knack of it. Sitting quietly in a meditation would not be able to reveal all the aspects of Sanya, all the aspects of Vijnana, and even of Vedana and other, if you see the other sense doors. तो ये दोनों चीजें क्योंकि ये यूबिक्विटस हैं, कॉन्स्टेंटली अवेयर होंगी हमेशा, विज्ञान भी हमेशा होगा, संज्ञा भी हमेशा होगा। अब हमको वो जब हमारा सामान्य, तो इसीलिए भगवान ने संपजान पब्बम डाला सती पठाना, खाते पीते बैठते हुए संपजानकारी होते। अब संपजानकारी को आपने टर्मिनेट कर दिया एक पर्टिकुलर लेवल पे, बस यही इसका मतलब है संपजान। नो, मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, which means have knowledge about everything. That's the way. So if you are working in the Khanda paradigm, you have knowledge about every Khanda, what is going on, at least the ones which are impinging very strongly. If you focus on one dimension, then there will be problems. That's what I'm trying to say. So क्योंकि एक परंपरा में काफी, if you study the literature of this, mostly people think कि चिंतनमयी पन्या जो है वो liberate नहीं करेंगे. That's why this question is arising. So, Dharsam, just like Surenji said, मेरी भी समझ इसी तरह से है और थी that the daira of bhavna is a broad daira, है ना?
तो मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि rather than sort of this assumption कि ये जो आपने ये जो चीजें कही that there is such and such in literature and so on and so forth, yeah, maybe, but जब मैंने कल आपसे शाम को ये कहा था कि भाई अब करना क्या है, आप can we go there, so if I may request you कि, and if not this evening, maybe in the next few days, कि if you are able to suggest analytical questions we put to ourselves in the course of life, at least that's how my teachers have taught me, है ना, जो हम और भी खंडों का करते हैं, the way we are taught in our tradition is to do it on the go, so to say. So मेरा actually तात्पर्य वो था कि अगर आप उसी प्रकार से if you are able to create for us various microscopes, so to say, to analyze experience that enable us to then also begin to look at Vinyan as we have begun to look, for example, at Sanya, जो कि इसी तरीके की है, जो you know, which is sort of ephemeral somewhere out there, so to say. But we ask ourselves, okay, what makes this feel unpleasant, and then you know the answer emerges. So really, that is where I was getting at, or I am now getting at. So if I may put the request in that manner, does that sort of make sense? Can you help me? I felt that because of the great difference between Vijnana and others, this background is important so that we don't get into a kind of the perception that all this is just glib talk and it has nothing to do with practice, it's not bhavana and so on. Anyway, if people, those things, in fact, in some sense, we have discussed it over the 2 months in various small hints. Let me give them hints, okay? Now, how do we know that the Vijnana is arising and passing away? That's a very important question, isn't it? As I have mentioned many times, if you directly experience sight and sound, it's quite obvious to you. And अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, something which is very absorbing, and you try to focus entirely on the sight or details of the sight, you lose the sound. And if you focus on the sound, clear nahi hai, I want to see the sound, you lose on the sight. One can verify that. This itself does 2 things. At one moment, only one Vijnana will arise. And therefore, when we are looking at audio-visual stuff, they must be alternating very rapidly, because otherwise we would be totally disjointed. और अगर आप उसको स्लो स्पीड से चला के कभी देखें, अगर आपके पास वीडियो हो और उसको स्लो स्पीड से चला के देखें, तो you get a really wonderful idea of what's going on, because you can see frames one by one. Then you can see sound one by one. You can see the discrete nature of Vijnana, discrete nature of sound. So that has been a very helpful to me in understanding this issue, that at one mind moment there will be only one Vijnana, and that itself settles the matter. By inference, कि मुझे लग रहा है कि साउंड और साइट में साइमल्टेनियसली देख रहा हूँ, मैं आपको देख भी रहा हूँ, आपको सुन भी रहा हूँ, लगता तो यही है ना. बट जब मैं उसको खूब गहराई से देखता हूँ तो पता चलता है कुछ गड़बड़ है. मैं एक बॉल पार्क पिक्चर देख रहा हूँ और एक बॉल पार्क साउंड सुन रहा हूँ, क्योंकि अगर वो उसकी स्पीड जो है मेरी आंखों की और कानों की एबिलिटी से डिफरेंट हो जाए तो मुझे नहीं पता चलता क्या हो रहा है. So I can easily see that thing, easily infer कि अगर मैं साउंड और साइट को देखने में गैप होता तो फिर तो कभी भी मुझे सिंक्रोनिसिटी लगती ही नहीं शब्दों में. और कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में भी, वीडियो में भी मिसमैच हो जाता है, क्योंकि साउंड को वो ठीक से मैच नहीं करते. तो लिप मूवमेंट कुछ हो रही है, साउंड कुछ और आ रही है. You can easily, it happens sometimes when the synchronization is not done properly.
क्योंकि आजकल डबिंग होती है और बाद में उसको ऐड करते हैं, उसमें थोड़ा सा गैप हो जाए, then you can see, oh, sound is separate, sight is separate. And then if you focus on the sound, you lose sight, especially in those things. If you focus on the sight, you lose sound. In those things where there is mismatch, it constantly keeps on happening. But therefore what? क्योंकि ये उदाहरण आप कई बार दे चुके हो. I'm not able to get so what? Therefore, that they are impermanent, they are arising and passing away. That's it. Therefore, this seeing is arising, and then sight is, hearing is arising, then seeing is arising, hearing is arising. That's how the process is happening. Because otherwise it's not possible to hear them simultaneously. It's not possible. It's a logical inference. अगर उनमें गैप होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है और शब्द कहाँ से आ रहे हैं. जब वो सिंक्रोनाइज होते हैं तो हमको लगता है वहीं से शब्द आ रहे हैं. So then can we put it like this, that lots of things are usually happening around us, but we come to know predominantly thing on which we have attention. And as far as our attention is variable, therefore what we will cognize will also be variable, and that perhaps is again inferential way of saying that Vigyan is everything. If we feel satisfied with that, surely that can be a beginning. I wanted to know what is the deficiency in this kind of analysis. Because when we have the real problem arises when we see things happening simultaneously. And then you can really discern that things are, शायद दीपक जी ने कहा था ना, you can't find out moment to moment change. No, you can infer it. That moment to moment sight consciousness is arising, then sound, then sight, then sound, then sight, and the gap between them is so small that मुझे पता ही नहीं चलता. वो भी ठीक है. अदरवाइज तो मुझे कभी लगेगा ही नहीं, कोई भी फिल्म में देख लूं मुझे लगेगा ही नहीं कि वही आदमी बोल रहा है, बिकॉज उसमें गैप हो जाएगा. So that is, to me, I mean, it seems a convincing argument that sight and sound are arising and passing away at a very rapid rate. So the anicca becomes very, very clear in that sense. Of course, in the long-term sense, जैसे दीपक जी ने कहा, हमारी सुनने की क्षमता, कल भी हमने चर्चा की थी, सुनने की क्षमता कम हो रही है, so we derive inference from there. देखने की क्षमता कम हो रही है, we derive inference from there. But it takes time, and therefore it's spread over a long period of time. So then we derive conclusions in that manner. But to me personally, it seems this is a very strong indicator of moment-to-moment change in sight and sound. It's in keeping with Abhidhamma, I think, perhaps. Yeah, that the Chakhu Vijnana and Sota Vijnana are rapidly alternatively rising, because if they are not rapidly rising, we will be able to distinguish them. हम साइट के, हमें मालूम है पिक्चर के फ्रेम्स अगर 10 पर सेकंड से ज्यादा हो तो हमको कंटिन्यूस लगते हैं, स्लो हो तो हमको अलग अलग लगते हैं. वी नो दैट. सिमिलरली साउंड, बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटीज टू सी हियर इन अ सर्टेन रीजन, उससे ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा तो हमें, वी हैव स्टडीड इन साइंस, सो मेनी अदर इफेक्ट्स हैपन, डॉपलर इफेक्ट, सो मेनी थिंग्स यू हैव सीन. अगर रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसकी साउंड डिस्टॉर्ट हो जाती है. सो वी कैन सी दैट. And therefore, when you put it and see this, it's a clear reminder to me, yeah, they are changing, constantly changing. ऐसा मुझे लगता है. अगर इसमें कोई आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, so I'll be very happy to reflect on it more. Thank you, sir. और फिर अनंत का मामला धर साहब वो है, हाँ, कि अगर कंडीशंस होंगी तो वो हो क्या रहेगा कुछ. अच्छा, सॉरी, we go with that. I stopped with it. Sorry. So that is one thing. Then second is the issue of anatta. भगवान ने भी कहा कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. That is the argument the Lord uses in Anatta Lakkhana Sutta. It's not within our control. Now that lack of control is extremely strongly indicated by a very simple experiment. जो वो भी मैं कई बार आपसे शेयर कर चुका हूँ कि भाई हम डिसाइड कर लें मुझे नहीं सुनना है, वो तो सुन के ही रहेगा. कंडीशंस होंगी तो वो अपने आप सुनेगा, तुम कुछ कर लो चाहे ना करो. ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है, मैं इसकी बात नहीं सुनना चाहता.
नहीं होता ना ये, हम नहीं सुनना चाहते इसकी बात भाई, नहीं कर लो, क्या करोगे, उठ के जाओ, कंडीशंस को चेंज करो तब होगा, नहीं तो कंडीशंस अगर करेक्ट हैं तो सुनना पड़ेगा, कंडीशंस करेक्ट है तो सूंघना ही पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, they will operate autonomously, you have no control whatsoever. So that's to me seems to be a very clear indicator of lack of control. It's not me, it's not mine, it's certainly not mine. मैं बहुत सिंसियरली चाह रहा हूं कि मैं ये बकबक ना सुनूं, कहीं बैठा हूं, लेकिन impossible for do. So that's how I have been trying to understand, and I'm just sharing with you. Whether it makes sense or not, you may kindly give me, then maybe I'll think more and reflect on more on my experience and figure out if something more can be done. Yeah, now questions are invited. My question is very small question, sir. Ji. Vigyan needs equipment like eyes or ears and for having the Vigyan arising or follow. निखिल, वो ध्यान रखना ना. And these equipments are temporary and are decaying and is made of atoms. Yeah. We can influence from this Yeah. that our Vigyan will also depend on the equipment. For example, if a person is sort of hearing, it means the Vigyan will not arise him, or arises, then it will be at lower intensity. Yeah, that also can be a valid argument, certainly. कि भाई जो विज्ञान जागता है चक्षु और रूप के आधार पर, चक्षु बदल रहा है, रूप बदल रहा है, तो विज्ञान भी बदलेगा. We can derive that inference also. Definitely. That's a valid reference, which is pointed out by many scholars. That also is pointed out, certainly. From what you have stated, it appears that विज्ञान को अनंत समझना आसान है, नित्य समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. You can say so. That perception would vary from person to person. My perception, मुझे लगा है. Yeah, बिल्कुल ठीक बात है आपकी. I'm not saying it's right or wrong. I'm saying, yeah, that's also, it seems like that, certainly. Yeah. अब आप ये देखिए कि हम तो इतने आराम से कह रहे हैं कि विज्ञान को अनंत देखना आसान है. 5000 साल तक उसके बेसिस पे फिलॉसफी बनी हुई है. आप ये देखिए ना, see the gravity of the situation. We have, overwhelming majority of the world now, I would say overwhelming, among the scientific community, majority of the people are more easily accepting the fact that there is a universal consciousness. And that philosophy, very respected philosophy, had existed in our Indic civilization for thousands of years. And here comes Buddha, he says, no, it's changing. It's not you, it's not yours. The whole concept of Atma is based on that. And he's challenging it. So you see the enormity of his observations. Because जो most well accepted notion of Atma यही है कि वो pure consciousness है. Atman and Brahman are the same. The reality outside, reality inside, the fundamental reality are same, and that is of the nature of consciousness. And that is my true identity. I am that. We have millions of people who believe in that and have a lot of logical, scientific rationale. There is a science and non-duality conference going on every few months or every year, where distinguished scientists, distinguished scholars come. And even in our Buddhist tradition, there are schools who believe in that. So it's a very major issue, really.
So if we talk about universal consciousness, that kind of debate is very likely, and as you said, it is an ongoing thing, and we don't know the truth, perhaps. But as far as the sense consciousness is concerned, that is easier to perhaps at least perceive and understand a little bit better. जी जी ठीक बात ठीक बात The issue arises, issue was with respect to Atta. Atta, what is Atta? Is there Atta or not? Buddha says no. All others say yes. That's it. What it is, we can debate. Now, that's a very fundamental change, a powerful change in the insight, understanding, whatever you want to say. And inadequate understanding of that, or inadequate understanding of Atman, has led to enormous conflicts in the society. And if we try to implement them without proper understanding, it can distort our life, actually. It's not a minor thing, it's a very major influencer in our way of looking at the world. Anyway, we don't have to get into it. हमारा limited objective यहाँ पे नहीं था कि हम समझें कि विज्ञान अनंत लक्षण सूत्र में भगवान कौन सी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि वो प्राइमरीली सेंस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, but I may be wrong. Yeah, but he doesn't use the word sense consciousness. He uses Vijnana. And then there are so many discourses where he rules out the possibility of a universal consciousness. ब्रह्मजाला सुत्ता, महातना, बेचारे साथी की तो अच्छी डांट पड़ती है। मुझे याद है जब हमने पहली बार पढ़ा था यहाँ पे अपने संडे ग्रुप में, तो जो हमारे एक मित्र आए थे जो कहते ये तो दिस डज नॉट बिहेव बुद्धा, कितनी बुरी तरह डांट रहे हैं उसको। So he was only saying that same consciousness goes from one place to another. And what is it? Then that by which we see, by which we hear. He tells him, foolish person, when did you hear me teach this? And similar thing is occurring at many other places. So there is a focusing our attention on Vijnana in the sense in which we know, sense sphere Vijnana, we realize that it is impermanent, changing, and therefore the attachment to that will cause dukkha. That's it. Which is that this part becomes clear because we have already discussed it a lot yesterday also. तो जब हम रूप के प्रति जब हम अटैचमेंट कम होती है, we can't assume कि naturally विज्ञान के प्रति भी हो रही है, because it's so closely related, especially the sense consciousness part. That's the beauty. That's sadhu. That's the mistake which we do. That's the mistake which we do. हमारी रूप के प्रति कम हो गई, या प्रैक्टिस में वेदना के प्रति हम इक्वानिमिटी रख पा रहे हैं, कैसे भी रख पा रहे हैं, वो गैसितानी है कि नेकम मानी है, उसको छोड़ देते हैं, तो अब तो इक्वानिमिटी हो गई, अब तो क्या है, एवरीथिंग विल बी फाइन. We have no idea what is sanya, we have no idea of Vijnana as anatta or whatever. And we keep on feeling that, yeah, I understand. I know it. And I'm a living example of that. So, Dharsa, briefly, sense sphere Vijnan, this is clear. और ये कहना ठीक रहेगा ना, and we don't need to go long, you can just say yes or no. ये कहना ठीक रहेगा ना कि जो हमारी थेरावाडन स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसके अलावा दो और विज्ञान स्पेसिफाइड है. एक तो वो जो रीबर्थ लिंकिंग वाली है, केवल एक वन टाइम यूज है उसका, नंबर 2, और नंबर 3 जो अनित दर्शन है, जिसमें जो कि अरहंत फल समाधि के दौरान है.
सो केवल ये 3 है जो अब जो मैं समझाऊं ये सारे लॉन्ग डिस्कशन के बाद. इज दैट राइट और नॉट? Partially right. Because if you take the Patisandhi, that's not called Vijnana, that's called Patisandhi Chitta. So it's not a sense sphere Vijnana. No, correct. No, I said that. And there are other Vijnanas, Chittas also. ना आपको याद होगा हमने अभी में डिस्कस किया था. Some Tiran Chitta, the receiving Chitta, the determining Chitta, investigating Chitta. They're all functional Chittas, which have a specific function. So that is the Abhidhammic classification, which is not directly found in suttas, but hints are found of that. So ये एक दिक्कत है हमारी. From the sutta point of view, we can say there is basically from our practical point of view, from our point of view of working for freedom from suffering, we have the sense sphere Vijnana, which we should understand thoroughly as anicca, dukkha, anatta. अनिर्देशन विज्ञान जब अनंत बने वो ठीक है हटाई देते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन से. हमें समझ लिया, ठीक है, अच्छी बात है. सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंस फेयर होगा. बिल्कुल ठीक है, आई एम विद यू. जस्ट टू कंप्लीट द पिक्चर, just so that if I am saying something to somebody doctrinally, I don't slip, remain confining to sutta, है ना, फिलहाल अभिधम को हम छोड़ दें. तो उसमें अनित दर्शन तो क्लियर है, अलग से आ रही है, और ये वाली क्लियर है, बस दैट्स इट. या हम इन्फर कर लें कि पतंजलि समुपाद में वहां ऊपर वाली जो विज्ञान है वो रिवर्स लिंकिंग, ऐसा कर लें कि नहीं करें? आप कंप्लीटनेस के लिए बता दीजिए बस. जो संखार पच्चय विज्ञानम है और विज्ञान पच्चय नाम रूप है, दे आर इन द थ्री लाइफ पैराडाइम, दे आर द वन व्हिच लीड टू गंधब्बा, जिसको कहा गया, जैसे कल हमने पढ़ा था ना, द कॉन्शियसनेस व्हिच इज जॉइनिंग इन द नेक्स्ट लाइफ. अनफॉर्चुनेटली सुत्ता में पटिसंधि शब्द ही नहीं है. नहीं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड. सो वी कैन से हाँ, दैट इज रेफरिंग टू दैट. दैट्स ऑल. So 3. Yeah. Very good. Thanks. Yeah, I got it. So sorry, I'm still kind of thinking about the रूप and the विज्ञान relationship. जैसे हम मतलब एटलीस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कर रही थी कि अगर रूप के प्रति मैं कुछ अनात्म भाव या अनित्य बोध डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, somehow I had assumed that implicitly मैं विज्ञान पे भी काम कर रही हूँ. But I just realized कि if I'm saying that ठीक है, the looks don't matter so much. Let's say मैंने अशुभ संज्ञा प्रैक्टिस करी, but that will not by itself make me accept the declining eyesight. Yeah. Sadhu. Big insight. This is what was meant by insight. इतनी लंच का मेन्यू क्या था, भेज देना भैया, कर लेंगे हम लोग. Really very, very important thing. It took me a long time to come to that conclusion because of various reasons. So you've done the hard work for us, so हमको तो you made it easy for us actually. So that's really very important to understand that, because it's always in all traditions just pointed out कि विज्ञान के प्रति जो आइडेंटिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि हमको पता ही नहीं चलती. मैं ही तो देख रहा हूँ, और कौन देख रहा है भाई? तुम देख रहे हो क्या? इट्स कॉमन पार्लेंस में. अब वो मैं कौन है जो देख रहा है? मैं हूँ, और क्या है? That's what I am. That's why that is the last bondage which trips us off. And to see that this also is conditioned, this also is not me, not mine, really needs substantive quietness, investigation, and ruling out all possibilities. उस तरह से काम होता है ना, ruling out all possibilities by various argument, as Buddha does it in the Anatya Lakkhana Sutta, or in the आदित्य पर्याय सूत्र में वो कहते हैं सब कुछ जल रहा है. अब बताओ, आँख कहाँ जल रही है? कोई अगर ग्रॉस लेवल पे पूछे, आँख जल रही है, रूप जल रही है, कहाँ जल रही है? आँख जो है
राग से जल रही है, द्वेष से जल रही है, मोह से, हमें तो दिखती नहीं जलते हुए। चक्षु विज्ञान जल रहा है, इसमें क्या है, वो कैसे जल रहा है? Those people, listeners were of that quality, they could figure it out. हम उस तरह की बात को समझेंगे कैसे? It needs a lot of background. They all had psychic powers. They all had that penetration. इतना समाधि पुष्ट थी. So they could figure out what is he trying to say. कि ये हमारी जो हम साधना करते हैं अग्नि परिचर्या की, उसको उदाहरण लेके हमको समझा रहे हैं कि देखो देखो ये तुम किसको ऑब्लेशन डाल रहे हो, अग्नि को, अग्नि तो यहाँ है। और वो उस तरह की अग्नि नहीं है जैसी वो तुम कर रहे हो, वो राग द्वेष मोह की अग्नि है। And they immediately could get it. Yeah, that's true. How they would get it? We can also to get it by simply reflecting. कि आंख से हम देखते हैं, उसके प्रति राग जागता है ना, और वो हमको कैसे बेचैन कर देता है। That's it. Now, all that is the process of investigation. So in many suttas, you find that method used as a, we focus on Satipatthana as the way, कि देखते जाओ, करते जाओ, but that presumes so many things. जब शुरू में पढ़ा था तो गुरुजी ने खुद ही कहा, भाई आप सोचते हो कि शील कहाँ गए? हाँ, शील कहाँ गए? तो लोग इतने शील वाले हैं कि उनको पहले ही वो शील की अतियों में जा रहे हैं, तो उनको रोके रखो यार, उनको कुछ और कहो करने में। So that is the way these suttas have to be seen, context specific. हम उसको देख नहीं पाते, तो हम कह देंगे हाँ बस जो भी हो रहा है उसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। Well, it is that in that sutta it seems it is said, but that's not the way you get out of the understanding of anicca, dukkha, anatta. Unless you investigate, unless you see that it arose, that it is samudaya dhammanupassati, svaya dhammanupassati. You see them arising, you see their notice, so you have to note it and then derive an inference. It is arising and passing away. Yes, Apurva, you have something small, please put it precisely, question. Just a small fundamental question. अनंत लक्षण सूत्र में जहाँ विज्ञान यूज्ड है उसको हम सेंस स्फीयर कॉन्शियसनेस ही समझे ना? हेलो, हाँ जी, ठीक बात। दरअसल ब्रीफली इसको कैसे समझना है फिर, दिस बिजनेस जो हम लोग कई बार हमारे लेट्स से कई ट्रेडिशंस में जो ये एक समझ है ना, देयर इज द नोइंग दैट देयर इज सीइंग एंड देन देयर इज द नोइंग दैट देयर इज सीइंग, देयर इज द नोइंग दैट आई नो एंड आई नो दैट आई डोंट नो, यू नो, वो वाला जो डोमेन है। Now that goes into Vinyan, in how one set of us understand it. Very briefly, if you'd like to just say ke usko, when we hear something like that, how do we process it? I'll just give a hint because it is a big topic and I wrestled with it for a long time. In the Theravada tradition, this function of knowing what is arising and passing away is given to Sati. Period. Sati mein everything comes there. And even you will see in the Satipatthana Sutta it says, मेरे अंदर सती नहीं है, वो भी जानता है. And that is also Sati. So yes, yeah. That also, which means it is happening because of moment to moment. एक moment पे नहीं है, अगली moment में उसे पता चल गया सती नहीं है. But that mind moment is so small, you can't figure it out. So it needs a person who can penetrate to such an extent that he can see, yeah, it's happening. तो उसको जो हम मेटाफिजिकल खींच लेते हैं वो केवल हमारी इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट है. That is the issue. Yeah, that is what Buddha would like to tell us. But others have their own yeah, that's arguments, so we have to see that.
because they are arising and passing away. So in that mind movement, when there is absence of sati, you can't know it. But next mind movement, you know it. So if you very closely observe the arising of anger, for example, when we observe the arising of anger, we are not angry, because then sati has arisen. And that is in the next mind movement, which is fraction of a second away. So we can't discern कि अलग हो गया, हमको लगता है साथ ही हो रहा है. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वीडियो और ऑडियो में हो रहा है. Exactly same thing is happening there. So that's the way I have been. मेरी समझ में आता है. अब आगे whether it's right or wrong. That also then underlines के थोड़ी थोड़ी अभिधम्म की तरफ हमें खुल जाना चाहिए, because then it allows. It helps. It helps us. It helps us to resolve these and see the power of the basic tradition, fundamental tradition. जो हम उसको परिपूर्ण मानते हैं, अगर हम सचमुच में कहते हैं केवलम परिपूर्णम केवलम परिशुद्धम, then before we adopt any other attitude, let us investigate it further and break into our own mindsets. और जो धर साहब ये हम निकल जाते हैं नोइंग की तरफ, वो इसलिए ही है क्योंकि it is difficult to fully explain the entire range of experience. जितनी हमारी सूत्रों की समझ है, अब ये भी तो सीमा है ना कि हमने सूत्रों को कॉम्प्रिहेंसिवली तो शायद पढ़ा नहीं और समझा. एक्चुअली पढ़ भी लो तो समझ नहीं आता यार, ये भी दिक्कत है ना. देयर लैंग्वेज इज आर्केइक. और एक शब्द का हम जैसे खुद जाते सामान्य भाषा में, अभी भी हम बात करते हैं हिंदी में, एक शब्द का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है. वही वहां पे हो रहा होगा. तो हम अगर उसका डिक्शनरी मीनिंग लेने लगते हैं एग्जैक्टली, तो यू एंड अप इन रियल प्रॉब्लम. सो यू हैव टू, वन हैज टू हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल क्या कहा जा रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में उस शब्द का मतलब क्या होगा. अब वो कितना ठीक है कितना गलत है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है. इनफैक्ट अगर आप अजान थानीसारो का ट्रांसलेशन देखें, अजान सुजातो का ट्रांसलेशन देखें और भिक्खु बोधि का ट्रांसलेशन में डिफरेंस है. कई जगह बहुत क्रूशियल डिफरेंस है. उसी सूत्र के 3 ट्रांसलेशन तो आराम से, मतलब काफी कई जगह अवेलेबल है, सब जगह तो नहीं है, कई जगह तीनों 3 ग्रेट स्कॉलर्स ट्रांसलेशंस आर अवेलेबल. एंड इफ यू रीड देम वन आफ्टर अदर, यू विल बी रियली क्या हो रहा है. कई जगह भिक्खु सुदस्सो के ट्रांसलेशन अवेलेबल है, कई भिक्खु आनंद ज्योति के अवेलेबल. रियली क्वाइट स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस, because that one particular word is being interpreted in a different way. उसका जो grammatical structure है, whether he's meaning of or he's meaning by, how you can see how much difference it will be. तो वो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए we can never be sure. I mean, we have to very humbly accept we can never be sure. जितना जितना कोशिश करते हैं थोड़ा. तो अभी भी जो आपने अभी हमारे सामने रखा, which sounds at this point fairly convincing, उसको भी हम tentatively पकड़ें, क्योंकि I remember few years ago we were holding little bit different understanding, है ना? Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो, because holding on to anything is a problem. You know, especially atamayata, that is the real thing stuff. Giving up all holding and seeing things more and more clearly, seeing things more. Then seeing is in that quote unquote seeing. So then, and the whole acid test is, it is leading, क्या ये मेरे राग द्वेष मोह कम हो रहे हैं कि नहीं, पता मेरा अनात्मबोध पुष्ट हो रहा है या मैं आत्मबोध में फिर फंस गया हूँ. मैंने अब आत्मा किसी और चीज को बना लिया. अनित्य बोध दुख बोध भी पुष्ट हो रहे हैं. Very simple criteria but very profound. If you just follow these criteria, they prevent us from going astray. लेकिन एटीट्यूड फिर ये यूज किया जाए कि अभी ऐसा लगता है कि इस तरीके से. बिल्कुल. अभी तो I have learned it the hard way. At least 3 times, 2 times it's very significantly, 3rd time again, there has been a rethinking on my cherished stuff.
So you permit yourself to have like a fourth or a fifth coming in? Who knows? Who knows? Who knows? Maybe a Buddha arises and teaches us will be great. Thank you, Bhante ji. Thank you very much. एक मिनट, ट्रांसलेशन में आप अक्सर 3 का बोलते हो, तो पाली टेक्स्ट सोसाइटी का ट्रांसलेशन है उसमें भी तो है। उसको तो छोड़ ही दीजिए साहब, उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल you'll get lost. उसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको मत पढ़िए। मैं तो बड़े आदरपूर्वक कह रहा हूँ, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर वर्क, बट देयर ट्रांसलेशन इज फिनोमिनली ऑफ, सो उसको तो रहने दीजिए। भिक्खु बोधि, अजान थानिसारो, अजान सुजातो, reasonably good, but still on crucial points I can see why, because I've interacted with Bhikkhu Bodhi very strongly on certain questions, and I can see that because they hold strong perceptions about their view being right, and therefore they translate it accordingly. But Bhikkhu Bodhi has the greatness that even in his book he writes, "My teacher told me this, but I don't agree." It's great. I mean, हाथ जोड़ के उनके प्रणाम करो भाई. Says my teacher, because वो जो middle length नानामौली जी ने लिखी ना, उसको re-edit किया. He writes many other things. In the notes he'll write, my teacher has said this word, and in his talks he has said, I've heard him say in talks, my teacher translated it like this, but I respectfully disagree. That's the real greatness of a person. He's willing to put his neck down. Now, it doesn't mean he doesn't have respect. He's absolute respect for his teacher. इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है, इसका translation ऐसा होना चाहिए. And in one sutta, he actually mentioned it. We are totally, the scholarship is totally confused. The definition of vijnana given in this sutta is totally contradictory to everywhere else. मेरी हिम्मत नहीं होती ऐसे कह सकूं, but he's writing in a book. In notes he's written. So that is the example, a great example of a scholar, meditator who is willing to put कि मेरी समझ में ये आ रहा है. That's it. So then आपने कौन सी translation को ignore करने के लिए बोला? नहीं, मैं तो I won't say which. हमको really we have to figure out what appeals to us the most. I mean, PTS को तो definitely we don't give much value to that. With all respect for their huge work, the translation is quite off. Most of the time, that is quite off. Okay. Actually, Sorenji वो इतना popularly available भी नहीं है, so you don't need to worry that much. Thank you. No, I mean practically speaking. Practically नहीं available है. तो इसीलिए it is available on internet only. Thank you.